हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ क्वेश्चन पेपर व्हिच इज रिसेंटली हेल्ड इन December 24 फॉर CMA फाइनल ग्रुप 3 स्टूडेंट्स, राइट। एंड ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, लॉ के पेपर में मार्क्स लाना स्पेशली थ्योरी बेस्ड आंसर्स में इतना आसान नहीं होता, और यहाँ पर CMA फाइनल के लेवल पर तो और भी चैलेंजिंग हो जाता है। सो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ कंटेंट सही होना काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रेजेंटेशन और ICMA स्टडी मटेरियल्स के रेफरेंस का यूज़ करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड ये प्रैक्टिस आपको सिखाएगी कि कैसे ICMA के स्टडी मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट्स और लैंग्वेज को अपने आंसर्स में इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सको, राइट। एंड हमेशा एक बात याद रखो कि लॉ की जो थ्योरी पेपर्स में सक्सेस का रास्ता सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट आंसर राइटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। आप जितना स्ट्रक्चर्ड और ICMA रेफरेंस्ड आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही एग्जामिनर आपके आंसर से इम्प्रेस होगा। इसलिए हर क्वेश्चंस को एक अपॉर्चुनिटी समझो और उससे अपनी इम्प्रूवमेंट का एक और कदम बनाओ। सो प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली और देखना कैसे ये मेहनत आपको बेटर रिजल्ट की तरफ ले जाएगी, राइट। सो लेट्स बिगिन। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और समझते हैं कि कैसे ICMA स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आंसर्स को और इम्पैक्टफुल बनाया जाए, राइट। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को अगेन डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी, राइट। एंड पार्ट ए जो है, पार्ट ए का क्वेश्चन जो है वो है स्टेट द पर्सन्स एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट्स अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसको कहते हैं इन शॉर्ट LRS, एंड व्हाट आर द पर्पज फॉर व्हिच सच रेमिटेंस कैन बी मेड। तो ये है क्वेश्चन, राइट। तो ये भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर एक क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पर्सन्स एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट्स अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इन शॉर्ट LRS के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वेरियस पर्सन्स who are claim benefits under the liberalized remittance schemes are resident individuals, HUF, and any business person, right? Person for which for individual operating as a sole proprietors can avail of the scheme. And purpose for which remittance can be made is under the LRS. Different permissible purposes for which remittance can be made are personal remittances, educational purpose, medical treatment, ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड सम अदर एक्सपेंसेस, एंड जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट्स, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इन अदर केसेस, राइट। एंड हमेशा याद रखना, लिमिट फॉर रेमिटेंस इज अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर, राइट, फॉर द जो पर्पज ऑफ रेमिटेंस, राइट। सो अप टू 250,000 तक ही रेमिटेंस हो सकता है अंडर LRS, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर को अच्छे से लिखना है, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो सी, लेट्स राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7A। पर्सन्स एलिजिबल टू क्लेम benefits under the liberalized remittance scheme in short LRS, right. Right, persons eligible to claim benefits under the liberalized remittance scheme which is called in short LRS। तो आपको इसे हेडिंग देना है, देन लिखना है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in short RBI guidelines, the following persons
are eligible to claim benefits under the liberalized remittance scheme. In short, LRS, राइट। कौन कौन लोग होते हैं? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल, राइट। देन और कौन होते हैं? HUF, HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देन थर्ड में प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स, राइट। एंड ये इंपॉर्टेंटली रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF अनडिवाइडेड फैमिली एंड सोल बिजनेस पर्सन, राइट। देन एक्सप्लेन करना है। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स मीन्स इंडियन रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग माइनर्स ऑल्सो, minors are eligible to remit money under the LRS for permissible purpose, right? Individual residents including minors are eligible to remit money under the LRS for permissible purpose. Then second, और कौन एलिजिबल पर्सन होते हैं? वो है HUF अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो एक्सप्लेन करना है। HUFs are also allowed to remit money under the LRS subject to certain conditions, right? So HUFs are also allowed to remit money under the LRS subject to certain conditions. Then आता है सिंगल मैन बिजनेस पर्सन, राइट। तो जो इंडिविजुअल लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स ऑपरेटिंग एज सोल बिजनेस पर्सन कैन अवेल ऑफ द LRS स्कीम, राइट। बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल्स ऑपरेटिंग एज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ऑपरेटिंग एज सोल प्रोप्राइटर्स can avail of the scheme, right? Individual operating as sole proprietors can avail of the scheme. इतना ही लिखना है आपको। Persons eligible to claim benefits under the liberalized remittance scheme. One is resident individual, second HUF Hindu undivided family, and third proprietorship concern, right? Now purposes for which remittance can be made, second लाइन का आंसर जो है, what are the purpose for which such remittance can be made, right? तो यहां पर भी लिख देते हैं purpose for which remittance can be made, purpose for which remittance can be made. Purpose क्या है? See, under the LRS
Under the LRS, the following are the permissible purpose for which a remittance can be made. Right. Again, फर्स्ट पर्पज क्या है? पर्सनल रेमिटेंस के लिए, राइट, पर्सनल रेमिटेंस के लिए, और इसको एक्सप्लेन भी करना है। मैंने पहले हेडिंग्स लिखता हूं। देन सेकंड, एजुकेशनल पर्पज के लिए, एजुकेशनल पर्पज। देन थर्ड, मेडिकल के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड देन टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस, टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस। और क्या? और इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है इन फॉरेन एसेट्स में, वो भी। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट्स। देन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, and any others, right. तो अगर एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल रेमिटेंस में इंक्लूड होता है जैसे कि गिफ्ट्स, डोनेशंस और रेमिटेंस टू क्लोज रिलेटिव्स residing abroad, right? So you can write that this includes gifts, donations, or you can say remittance to close relatives residing abroad, right? Only 1 to 2 sentences more than enough. Then educational purpose means अगर any expenses made, payment for coaching fees, tuition fees जैसे, और living expenses, you can say living expenses, हॉस्टल में रहने के लिए जो expenses, वो expenses, और other expenses related to education in foreign country, right, in foreign countries. Then medical expenses क्या है? Remittance for medical expenses abroad including hospitalization, consultation and surgery, right, and surgery etc. तो ऐसे लिख सकते हैं, रेमिटेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, abroad including hospitalization, consultation, सर्जरी एक्सेट्रा, ऐसे लिखना है। देन टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस में कैसे? जैसे कि पेमेंट फॉर ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस सच एज एयरलाइन टिकट्स, अकोमोडेशन एक्सेट्रा, ये सब के लिए भी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम हो सकता है। तो पेमेंट फॉर
tour and travel related expenses such as airline tickets, accommodation, etc. Right? Then investment in foreign assets means individuals are permitted to invest in assets such as, you can say, immovable asset हो गया, right? और या फिर stocks, bonds, और you can say other investment product abroad, right? तो ऐसे ही लिख सकते हैं, individuals are permitted what to invest in assets such as property और क्या, stocks, bonds or other investment product abroad, right? Individuals are permitted to invest in assets such as property, stocks, bonds or other investment product abroad. Then business and employment के केस में funds can be sent for meeting business related expenses or investment or for settling overseas employment related expenses. You can write that funds can be sent for what purpose? For meeting business related expenses, or investments or for settling overseas employment related expenses, right? तो जितना आप नीट एंड क्लीन के साथ लिखोगे उतना ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा, राइट? देन अदर्स मीन्स एनी अदर लेजिटिमेट पर्पस, as specified by the RBI from time to time, right? तो ऐसे ही आपको 1 to 2 सेंटेंस के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है और लास्ट को लिखना है लिमिट फॉर रेमिटेंस। जो LRS का स्कीम है वो LRS के अंदर लिमिट कितना है, लिमिट फॉर रेमिटेंस के केस में आपको पता होना चाहिए द LRS allows an individual to remit up to कितना, $250,000 for financial year for the above purpose। मतलब ये जो सारे पर्पज है रेमिटेंस के अंदर जो एक्सपेंसेस, ये 250,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है $, के हिसाब से फॉर द अबव पर्पज, राइट? तो इतना ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7A का जो क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड दिस इज सफिशिएंट आंसर। आपको पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, स्टेट द पर्सन्स एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट्स अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम व्हिच इज कॉल्ड LRS।
तो आपको ऐसे लिखना है, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट्स अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। फर्स्ट वन आता है रेसिडेंट इंडिविजुअल। रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडियन रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर एलिजिबल टू रेमिट मनी अंडर द LRS फॉर परमिसेबल पर्पज, राइट। देन कौन आता है HUF। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUFs are also allowed to remit money under the LRS subject to certain conditions. Then आता है single man business person. Single man business person. So which is called individuals. अगर individuals operating as sole proprietors then can avail of the LRS scheme. Simple. राइट। तो 3 आपको इंपॉर्टेंट पर्सनस का लिखना है जो कि एलिजिबल होते हैं टू क्लेम बेनिफिट्स अंडर द LRS स्कीम। देन पर्पज फॉर व्हिच रेमिटेंस कैन बी मेड, जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, व्हाट आर द पर्पज फॉर व्हिच सच रेमिटेंस कैन बी मेड। तो पर्पज फॉर व्हिच रेमिटेंस कैन बी मेड, सो अंडर द LRS द फॉलोइंग आर द परमिसेबल पर्पज फॉर व्हिच रेमिटेंस कैन बी मेड। फर्स्ट वन इज फॉर पर्सनल रेमिटेंस, फॉर पर्सनल रेमिटेंस, राइट। एंड पर्सनल रेमिटेंस के अंदर इंक्लूड होता है क्या क्या चीज़, एक तो हो गया आपका गिफ्ट्स, देन डोनेशंस और रेमिटेंस टू क्लोज रिलेटिव्स रिसाइडिंग अब्रॉड, राइट। ये है पर्सनल रेमिटेंस। देन आता है एजुकेशनल पर्पज। एजुकेशनल पर्पज मीन्स पेमेंट फॉर कोचिंग फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के लिए जो एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हो रहा है वो एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए LRS स्कीम के द्वारा मनी सेंड किया जा सकता है। देन मेडिकल एक्सपेंसेस, तो रेमिटेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन, कंसल्टेशन एंड सर्जरी, ये सब के लिए भी जो LRS के हिसाब से एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। ट्रैवल एक्सपेंसेस मीन्स पेमेंट किया जा सकता है फॉर टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस सच एज एयरलाइन टिकट्स और अकोमोडेशन एक्सेट्रा। देन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन एसेट्स में। इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन एसेट्स सच एज मूवेबल एसेट्स, स्टॉक्स, bonds or other investment product abroad but subject to limit up to $250,000. Then business and employment. Funds can be sent for meeting business related expenses or investment or for settling overseas employment related expenses. Then others, any other legitimate purpose as specified by the RBI from time to time. Any other legitimate purpose as specified by the RBI from time to time. Right. Now most important है लिमिट फॉर रेमिटेंस। अब ये सब जो एक्सपेंडिचर हो रहा है LRS स्कीम के हिसाब से ये कितना होना चाहिए, तो LRS अलाउज एन इंडिविजुअल टू रेमिट अप टू $250,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर फॉर द एबोव पर्पज। तो ये MCQ, इसमें MCQ का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि द LRS अलाउज एन इंडिविजुअल टू रेमिट अप टू $250,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर फॉर द एबोव पर्पज, राइट। तो ये है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट A। एंड ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है सो दैट यू विल एबल टू सिक्योर फुल टू फुल 7 मार्क्स, राइट। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है अच्छे से सो दैट यू कैन एबल टू प्रेजेंट आंसर्स इन एग्जाम, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7B का जो आंसर है वो लिखना है, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।